आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं भी compete करूंगा शेरू क्लासिक में। फाइनली भाई। Hey guys, hot topic. Tarun Gill, the TG, is finally competing. He's competing in India's biggest bodybuilding show, Sheru Classic. तो तरुण गिल को मैंने देखना शुरू किया था 5-6 साल पहले when he used to give out no BS information, he used to debunk myths and he used to give out knowledge and he had an amazing channel. Well, तरुण भाई के over 1300 वीडियोस हैं और उनमें से 500 इंटरव्यूज हैं बॉडी बिल्डर्स के। तरुण भाई ने सबसे नॉलेज ले ली, सबके एक्सपीरियंस से इतना कुछ सीख लिया, सारा मटीरियल इकट्ठा कर लिया एंड नाउ इज रेडी टू कम्पीट। एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, ही इज ओवर 30 नाउ, इट्स गोना बी अ बिट हार्ड टू बीट ऑल द यंग टैलेंट दैट्स कमिंग अप। ओवर 30 आपका जो टेस्टोस्टेरोन है इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तरुण भाई 3-4 साल पहले कर लेते यार। अगर आप लोग तरुण भाई को जानते हैं, यू नो हाउ मेनी टाइम्स ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ यूजिंग PEDs एंड विदाउट PEDs. He's talked about supplementation, he's talked about training, he's talked about gear, everything in the fitness industry. जो भी आपके दिमाग में आता है, he's talked about it on YouTube. Yes, बहुत controversial topics में भी रह चुके हैं तरुण भाई, but we're not going to talk about that today. What we're going to talk about is his decision to compete. And I'm here to basically give you all the information on his training, on his diet and on his supplementation from his videos जो मैंने अभी तक देखे हैं। So पहले ही बता देता हूँ, I'm not a prep coach, so I'll be covering the topic that I have knowledge on. Not gonna lie, Tarun bhai is in a good shape right now and it should be easy for him to get into a better shape once he starts his PEDs. नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेनिंग और खाना easy हो जाएगा, supplementation भी easy नहीं होगा, but it's gonna be easier than a natural bodybuilder for his results to show up. So Tarun bhai के हिसाब से he's gonna hire 2 coaches. One is gonna be his transformation coach who's gonna help him cut down fat and get into better shape, and then there's gonna be a prep coach. The prep coach is the one that's gonna help him prepare for his competition. Well, Tarun bhai को भी fat cut करना है because अभी he's holding a bit of fat and he will have to speed it up because सिर्फ 100 दिन रह गए हैं। जैसे he starts cutting down fat, he's gonna get a prep coach and the prep coach is gonna help him get ready for the stage. अभी तरुण भाई के लिए 95 days बचे हैं। होपफुली शेरू क्लासिक होगा। लेट्स गेट इनटू तरुण भाई ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक मैंने उनके 5 वीडियो देखे हैं रोड टू शेरू क्लासिक के एंड अकॉर्डिंग टू दैट एवरी सिंगल मॉर्निंग ही गोज फॉर फास्टेड कार्डियो। इवन दो इसका कोई बेनिफिट्स नहीं देखा गया, इट्स नॉट सुपीरियर टू डूइंग कार्डियो आफ्टर योर फूड, बट स्टिल मेनी बॉडी बिल्डर्स प्रेफर डूइंग इट फास्टेड। वेल, इट इज योर चॉइस। हिज ट्रेनिंग इज वेरी हाई वॉल्यूम, very, very, very high volume. Here is an example for his training from the past 3 days. His split is something like a generic bodybuilder training split. Not one muscle a day, thankfully, but his split is something like back and chest on one day, second day is shoulders, biceps and triceps, and third day is legs and abs. Each muscle is hit twice every week. Abs की उन्होंने अलग से बात नहीं करी, but I'm assuming he's hitting them with legs. इनके इतने सेट्स, इतने रेप्स होते हैं कि उनको 2-3 घंटे लग जाते हैं अपना वर्कआउट खत्म करने में। There is a lot of static stretching before and after workout. 3, 2, 1. अभी वर्कआउट शुरू भी नहीं हुआ है, स्ट्रेचिंग है सिर्फ। Even though static stretching पहले नहीं करनी चाहिए according to this research, it says कि अगर आप पहले stretch करते हैं, you are not gonna have much energy for your workouts. You will not be able to lift heavier. Even though I do not suggest static stretching before workouts because it can really tire your muscle out. आप थक जाते हैं थोड़ा static stretching से। अगर ढंग से किया जाए, I would really suggest doing it after your workout, but it's really up to Tarun bhai, whatever he wants to do. अभी तरुण भाई का फोकस है to cut down as much fat as he can while building muscle. आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे होगा, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, he's been training for so long. ऐसा होगा because he's gonna be using PEDs, no matter what anyone says. Steroids का यूज होने वाला है and that will help him cut down fat while building muscle. ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जब प्रेप का टाइम आता है, प्रेप के टाइम पे तरुण भाई ने किस चीज़ों पे फोकस करना है? He's gonna be focusing on defining the muscle more, building a bit more muscle if he can, getting symmetry in the muscles and posing. Posing बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तरुण भाई के लिए। Those are the vlogs जो मैं तरुण भाई के वेट नहीं कर पा रहा। Contest prep is hard guys, only the elites get there. वो सब देखिएगा when he's done with the transformation phase. एक चीज़ मेरे को स्ट्राइक करी, but you know obviously ऐसा hopefully नहीं होने वाला, but is he actually competing or is this just a strategy to boost big muscles की sales? सोचना पड़ेगा। I'm just messing with you guys. I know he's competing. मैंने शुरू से तरुण भाई को देखा है, वो competitors का interviews कर रहे होते हैं and I really hope to see him on the stage this year.
Talking about his diet now, Tarun bhai is gonna follow a vegetarian diet. So जब अपनी diet की बात कर रहे थे, he said that carbs and fats are on the lower side while protein is on a really high side. उनके वीडियो में जो most common चीजें देखी गई हैं, that's mushrooms and that's boiled potatoes and that's whey protein. That's it. I saw less than a cup of eggs and I saw less than a cup of paneer. So I don't think that's his primary protein source. But yes, I would like to say kudos for one thing. Getting potatoes in your diet is a really good idea if you're cutting down because potato का जो satiety index होता है, it is really high and potatoes keep you fuller for longer. जो मैंने देखा तरुण भाई का जो max protein intake है, that is from whey protein. There is at least 5 to 6 scoops of whey every single day. And also other forms of protein from supplements. Guys, जो आप लोग देख रहे हो, if you are into fitness and you're not competing, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है. आप tofu, सोया, पनीर, ग्रीक योगर्ट etc. खा सकते हो अगर आप वेजिटेरियन हो. आप ये सब खा के अपना पोर्शन कंट्रोल करके फैट लॉस कर सकते हो. आपको इतना एक्सट्रीम में जाने की ज़रूरत नहीं है. उसके साथ उनके ट्रेनर ने उनको ला के दिया है कलौंजी एंड मेथी के दाने. He calls them fat burning ingredients. जो fenugreek seeds होते हैं या मेथी के दाने होते हैं, they do help with digestion and they enhance your bowel movement, which may make you weigh in lighter the next morning. But fat loss पे कोई direct effect नहीं है. जो supplements तरुण भाई लेने वाले हैं, they are whey protein, the most basic, the best supplement जो हम सभी लेते हैं. He's a vegetarian, so max of his protein is coming in from whey protein because that's the leanest source he can have. Second is EAAs or essential amino acids जो आपकी body naturally नहीं बना सकती. They are good for him, but if you are a generic gym goer आपको इसकी ज़रूरत नहीं है. Yes, researchers support करती हैं EAAs को in raising protein synthesis and building muscle, but you can still get those from your whey and from your foods. So आपको supplement की ज़रूरत नहीं है unless you're an athlete. BCAAs, branched chain amino acids are there in Tarun bhai's diet. वो उनको whey से भी मिल जाएगा, EAA से भी मिल जाएगा. ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपके पास पैसे तो आप ले सकते हो ट्राई करने के लिए. फिर आता है L-carnitine. L-carnitine की जो रिसर्च है वो कहती है आपको L-carnitine की तब तक ज़रूरत नहीं है unless you have a deficiency of L-carnitine. मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप PEDs पे हो, अगर आप स्टेरॉइड्स पे हो, everything is gonna work for you. आप कोई भी सप्लीमेंट लोगे वो काम करेगा. आप फैट बर्नर लोगे वो भी काम करेगा. एंड यू आर ऑन अ डाइट एंड यू आर कंपीटिंग, सो एवरीथिंग इज गोना वर्क फॉर यू. इफ यू आर इन अ डेफिसिट, इफ यू आर ऑन PEDs, everything works, even fat burners. Next supplement we have is not a very common supplement. It's called NAC or N-acetylcysteine. This is used for treating lung disorders. This may help him boost immunity and may help him with building endurance. आपको इस supplement की ज़रूरत नहीं है. The second last supplement we have is a pre-workout. Tarun bhai is going to be taking a high caffeine pre-workout. Why? Because seeing his workouts in the past few days, इतना कम खाना है and इतनी ज़्यादा training है, he needs that caffeine to push him. Caffeine will push him through low calories and low carbs. Last supplement that I'm going to talk about is a waste. I'm sorry, but it is. It's called glutamine. It's used for muscle recovery. अगर पैसे हैं, मन है, try करना है, ले लो, कोई use नहीं है. हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट मिले कि मैं ये ले रहा हूँ तो यू स्टार्ट वर्किंग हार्डर. अभी तक यही सब जानने को मिला है. होपफुली तरुण भाई के नेक्स्ट वीडियोस में वी गोना नो अबाउट हिज ट्रेनिंग इन द फ्यूचर, हिज साइकिल्स, हिज PCT, हिज रिकवरी एंड मोर सप्लीमेंटेशन. देखो गाइस, तरुण भाई को आइडिया तो है, उन्होंने बहुत बार अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म करी है, सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग विद इट. सो नाउ दैट ही इज गोना गो ऑन PEDs अगेन, ही इज गोना कम बैक स्ट्रॉन्गर एंड इट्स गोना बी ईजियर फॉर हिम बिकॉज ही हैज दैट मसल मेमोरी एंड ही नोज वेयर ही वांट्स टू गेट. एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, नो मैटर वॉट एनीवन सेज, PEDs आर गोना बी इन्वॉल्व्ड, बट PEDs डोंट वर्क अनलेस यू डू. घर बैठे बैठे आप इंजेक्ट करोगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा. यू नीड टू हैव योर ट्रेनिंग, यू नीड टू हैव योर न्यूट्रिशन, you need to have your recovery on point and then PEDs give you the results you want. एक चीज़ जो मैं एंड में डालना चाहूँगा जो तरुण भाई ने बोली was, जो एक बॉडी बिल्डर होता है उससे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं होता. आर्टिस्ट जो अपनी पेंटिंग खुद बनाता है शीशे में देख देख के. बॉडी बिल्डर होता है ना, वो अपने आप को देख के शीशे में अपने आप को पेंट करता है. Bodybuilding is one of the toughest and the hardest sport in this whole wide world. I have mad respect for anyone and everyone in it. बिफोर आई इन दिस वीडियो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, आप लोग इनकी डाइट, इनकी ट्रेनिंग, इनके सप्लीमेंटेशन को ट्राई नहीं करने वाले. गेट योर फिटनेस प्रोफेशनल, अपने लिए एक ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट सेलेक्ट कीजिए. गेट योर प्रोग्राम फिक्स. ऑनलाइन देखे गए प्रोग्राम्स आपको हेल्प नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट मेड फॉर यू. स्टे सेफ एंड ट्रेन स्मार्ट यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल.